गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार ट्रेडर्स। आज छुट्टी का दिन है, इट्स दशहरा 5th of October, वेडनेसडे मॉर्निंग 9:44। अगर छुट्टी नहीं होती तो द मार्केट वुड हैव बीन लाइव, बट आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस ब्रेक टू शेयर वन कॉन्सेप्ट विच इज़ अबाउट मल्टी चार्ट्स। आपने देखा होगा दैट many traders use multiple screens, बहुत सारे कंप्यूटर स्क्रीन्स, एंड कोई अगर एक या दो स्क्रीन यूज़ कर रहा है, एक स्क्रीन के अंदर भी 3-4 डिफरेंट चार्ट्स। सो दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी अबाउट मल्टीपल स्क्रीन्स बट अबाउट मल्टीपल चार्ट्स। हम लोग मल्टीपल स्क्रीन्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं ट्रेडर्स, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट एक पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर 2, 3 या 4 चार्ट्स का ज़रूरत क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ see, the way I look into it, there can be two ways. Let me put it down into some perspective. One way is आप same sector पे stick करते हो, you stick to the same sector, but you plot different stocks of the same sectors. And आप इस मामले में it's better that you keep the same time frame. For example, information technology, Infosys, Wipro, HCL Tech, Tech Mahindra, TCS, same sector, different stocks, उन सबके daily या weekly charts एक साथ. That can be one approach of multi charts on your screen. और एक जो है वो है same stock same है, but यहाँ पे different time frames. इससे क्या होगा, लेट्स से फ्रॉम समथिंग लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट, डेली चार्ट और लेट्स से 75 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। तो आप एक ही स्टॉक पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन उसी एक स्टॉक का मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे। बोथ द अप्रोचेज आर डिफरेंट ऑफ कोर्स, एंड बोथ द अप्रोचेज हैव देयर प्रॉस एंड कॉन्स। कब कौन सा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, चलिए विद सम एग्जांपल्स लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट्स टेक अप द फर्स्ट वन. The first one is where we will look at same sector, multiple stocks. तो यहाँ पे trading view पे we are using trading view. Let me use 4. Okay. So what I'll do is I'll click on I'll go clockwise. पहले इस पे, then over here, then here, then over here. This is how I'll move. So on my left hand side, let me type Infosys, and so this chart, as you can see, turns Infosys. ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है इन्फोसिस पे. सो आई कम एंड क्लिक ऑन द राइट हैंड साइड वन, एंड यहाँ पे आके मैं TCS टाइप करता हूँ. नाउ यू कैन सी दिस इज बिकम TCS. अब मैं नीचे के चार्ट पे आता हूँ, यहाँ पे आई क्लिक ऑन इट, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन आई लेट्स से टाइप विप्रो. आई टाइप विप्रो, बिकम्स विप्रो, एंड फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और HCL टेक, एंड इट बिकम्स HCL टेक. ठीक है. सो व्हेन यू डू दिस, मेक श्योर यू कम टू दिस पार्ट एंड यू सी दैट ओनली क्रॉस हेयर और इंटरवल इज सिलेक्टेड. आप सिंबल को सिलेक्ट करेंगे तो हर एक चार्ट एक सिंबल बन जाएगा, एक ही स्टॉक बन जाएगा. when you're plotting multiple stocks from the same sector, it's good that you click on time. इससे क्या होगा, what will happen is जब भी आप डेली चार्ट को क्लिक करेंगे, हर एक डिफरेंट स्टॉक्स का चार्ट डेली बन जाएगा या वीकली बन जाएगा. सो दैट्स ऑल्सो यूजफुल. सो नाउ लेट्स से वी हैव एन IT टेम्पलेट. इसके अंदर आप अपने इंडिकेटर्स, इसके अंदर आप अपने जो भी यूजफुल टूल्स है उसको डाल सकते हो. सो IT इज डाउन दिस ईयर, दिस इज 2022, एंड IT specifically is one sector which is down significantly, and you might be looking for some buying opportunities at relatively lesser price. तो आप one look, you can take a look at all the top 4, 5, 6, जितना भी आप चाहे कर सकते हो. Over here it gives you as many as 8. 8 would be very cluttered, but 4, 5, 6 I think is enough. But it gives you one view, look into 4 different stocks, right? And क्योंकि हम लोग ने टाइम पे क्लिक किया था, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे if I click on weekly now, the moment I click on weekly, all the charts will change. इन्फी रहेगा, TCS ही रहेगा, विप्रो और HCL टेक ही रहेगा, बट वो वीकली बन जाएगा. So one click, then I can understand the extent of how the long-term charts monthly, weekly looks like. So इसको हम लोग ज़्यादा टूल नहीं इस्तेमाल करेंगे, but just a quick look, we can clearly see the extent of the correction that Infosys has gone through, and TCS and Wipro का correction कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, and over here HCL Tech.
So just one look, couple of stocks from the same sector, एक double bottomish behavior यहाँ पे भी बन रहा है. यहाँ पे over here I can see some kind of a falling wedge kind of a behavior. So it gives you some perspective. This is one use in which you can use multiple charts on one screen. That's the first route that we discussed. The second route is a very useful route. मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ. I personally use that almost all the time. If you follow my YouTube channels, when I talk about the market view, etc., you'll always notice 3 या 4 charts है of the same stock, Nifty, Bank Nifty, but multiple time frames. I find this is very, very important for anyone who's seriously trading using the charts, especially if you're a visual trader. You should have a perspective about what that particular stock is doing in various different time frames. तो अगर आप एक ट्रेडर हो और आप एक स्टॉक पे ध्यान दे रहे हो ट्रेड करने के लिए, वो पर्टिकुलर स्टॉक का जो चार्ट्स है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, लार्जर टाइम फ्रेम्स में और लोअर टाइम फ्रेम्स में कैसे प्ले आउट हो रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक सो. तो चलिए, नाउ व्हाट वी विल डू इज, लेट्स से वी मेक 3 टाइम फ्रेम्स. अभी इसको 3 टाइम फ्रेम्स में तोड़ देते हैं एंड इसको अभी हम लोग सिंबल को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज नाउ वी विल कीप द सेम स्टॉक. टाइम को हटा देंगे बिकॉज डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होगा. क्रॉस हेयर को डेफिनेटली रखेंगे एंड इंटरवल को रख सकते हैं. नाउ लेट्स से वी टॉक अबाउट इन्फोसिस. ओके, लेफ्ट हैंड साइड इन्फोसिस वीकली है, देयर इज नो प्रॉब्लम. अभी ये यहाँ पे भी वीकली है, यहाँ पे भी वीकली है बिकॉज वी हैड प्रीवियसली डन दैट. नाउ यहाँ पे बीच का जो चार्ट है, द मिडिल वन, आई क्लिक ऑन इट, आई चेंज इट टू डेली. ऑल ऑफ देम आर चेंजिंग टू डेली. मैंने कुछ मिस कर गया होगा, इंटरवल, एंड नाउ लेट्स चेक वीकली, daily, and the right hand side 75. I will quickly cross check that if I have not made any mistake. टाइम को क्लिक कीजिए, इंटरवल एंड टाइम के बीच में मुझे मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग और आई मिस्ड आउट. टाइम इज लाइक जब मैं किसी पर्टिकुलर कैंडल पे अपना कर्सर रखता हूँ, बाकी के जो चार्ट्स है वो एग्जैक्टली वहाँ पे उस टाइम पे पहुँच जाता है. सो टाइम एट टाइम्स कभी कभी टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं. सो इन दिस केस प्लीज रिमेंबर, हम लोग टाइम को क्लिक करेंगे, इंटरवल को नहीं. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस ट्रिपल स्क्रीन. Infosys on the weekly time frame, the same stock Infosys on the daily time frame, and again the same stock Infosys on the 75-minute time frame. आप इससे और भी नीचे जा सकते हो, you can go to 15-minute time frames. आप weekly से भी और ज़्यादा जा सकते हो, you can go to the monthly time frames. Suits you. I would suggest minimum 3 time frames. मैं generally एक strategy follow करता हूँ जहाँ पे जो ट्रेड फ्रेम है, जिसको मैं ट्रेड फ्रेम बुलाता हूँ, जो चार्ट को देख के मैं अपना ट्रेड को डिसाइड कर रहा हूँ, my point of entry, my stop loss, trailing stop loss, this is the trade frame. उससे आप एक टाइम फ्रेम हायर पे नज़र रखिए और एक टाइम फ्रेम लोअर पे भी नज़र रखिए. वन टाइम फ्रेम हायर विच इज़ ट्रेड फ्रेम +1, मैं उसको TF+1 बुलाऊंगा, ट्रेड फ्रेम +1, और इसको TF-1 बुलाएंगे, ट्रेड फ्रेम -1. सो ट्रेड फ्रेम +1 जो है, द हायर टाइम फ्रेम, ये आपका एसेंशियली इट्स मोर लाइक योर ओवरऑल एनवायरनमेंट. मतलब क्या ये स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोमेंटम, अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड कोशिश कर रहे हो फ्रॉम द ट्रेड फ्रेम, यू आर ट्राइंग टू डू अ लॉन्ग ट्रेड, देन इट्स ऑलवेज गुड दैट योर हायर टाइम फ्रेम्स मोमेंटम इज सपोर्टिव. इट्स ऑलवेज गुड दैट आपके हायर टाइम फ्रेम्स को जो चार्ट्स है वहाँ वो कहीं एक रेजिस्टेंस के आसपास ना है. सो इट्स मोर अबाउट द ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ दैट हायर टाइम फ्रेम, इज इट सपोर्टिव और नॉट. Now when you come to TF-1, this is where you can be a little aggressive and you can time your exit if you're a short-term trader. मतलब देखिए, the lower time frames, 75-minute time frame बन के डेली बनता है और 4-5 डेली बन के वीकली बनता है, right? So any kind of movement will first get reflected on the lower time frames. तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्पेशली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ये पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन हैज गॉट नथिंग टू डू विद बाय एंड होल्ड. इट्स प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. सो अगर मैंने एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड लिया है, सोचिए इन्फोसिस पे, तो मैं क्लोज ध्यान रखूंगा TF-1 पे कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स कहीं पे मुझे कोई ऐसा सिग्नल दिखा रहा है, इट्स गिविंग मी सम काइंड ऑफ अ सिग्नल विच इज लाइकली टू रिवर्स. सो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज प्रोटेक्ट माई प्रॉफिट्स, and I would trail my stop loss. Yeah, I will book partially, yeah, book full. So this is ideal and applicable only for someone who's a very short term trader, like a hit and run. अभी लिया कुछ देर बाद बेच दिया, something like this.
where you would like to churn a lot, and so you can keep a very close look at the TF-1. There are other ways also. For example, मुझे Infosys सोचिए, I like Infosys the way it is shaped up on the daily time frame. Okay, this particular time frame I like Infosys also. Now I would like to time it on the lower time frame. मैं entry lower time frame से लेना चाहूँगा. There are various ways in which this can be done. A very simple way, मैं ज़्यादा details में नहीं जाऊँगा, but a very simple way is आपके higher time frame अगर trending है, सोचिए ये Infosys का daily chart है, ठीक है? And higher time frame यहाँ से यहाँ तक we can clearly see it was falling, right? Downtrend. So यहाँ से यहाँ तक मतलब from 12th of September to around 26th of September, इस टाइम फ्रेम के अगर आप 75 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, which is closely from this point to this point, ये 75 मिनट टाइम फ्रेम का Infosys का प्राइस बिहेवियर है, which is essentially not that far from, yeah, if I mark this to this on the 75 minute, it is this to this. तो ये 75 मिनट में ऐसा दिखता है, correct? So one very simple way is अगर आपके हायर टाइम फ्रेम्स ट्रेंडिंग है, इन दिस केस ट्रेंडिंग डाउन, देन आपके लोअर टाइम फ्रेम जब भी शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देगा, यू कैन लुक फॉर अ पुल बैक शॉट. आप शॉर्ट टर्म RSI यूज कर सकते हो, ओवरबॉट चला जाता है. यू कैन यूज अ शॉर्ट टर्म कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टोकेस्टिक्स इंडिकेटर whenever it goes to overbought region in the lower time frame, not on the main time frame. The main time frame determines your trend and the underlying momentum. The shorter time frame, you will try to time it whenever it goes overbought or oversold. This is one way, and there are a couple of other ways in which this can be done. I personally use triple, and in fact I use actually 4 different time frames. For the Indian equity markets, I like to look at weekly, daily, 75 and 50. I generally do not go below 50. So I'm taking a trade on the 75 minute time frame. तो मेरा one time frame lower is 15, one time frame higher is daily. If I'm taking a trade, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. I think if you take a look at it visually, it will make far more sense. So now I have 4 different time frames. Now you will see that if I'm taking a trade based on the 75 minute time frame, ये मेरा एक time frame lower, ये मेरा एक time frame higher. If I'm taking a trade based on the daily charts, this is my one time frame lower, this is my one time frame high. I generally trade and recommend my trades from these 2 time frames, and the long term trades which are cash market are primarily from the weekly. So one look at my stock. So if you tell me, please share your view on Reliance Industries. Okay. So the moment I click on Reliance Industries, when I open Reliance Industries with my necessary tools and indicators, I get a perspective of Reliance from 4 different time frames. The short term time frame can be very bullish, but the higher time frames may be bearish. So this is an opportunity maybe to sell or something else. But you get a perception, you get an understanding when one look, especially if you're a visual trader, one look and you get a perspective of वो stock different time frames में क्या हो रहा है. You will find, I have noticed this, that the best of the trades you get when you have a strong trend on across most of the time frames. When the higher time frames are really strong, picking up trades from the lower time frame is very easy because higher time frames का support है. When the lower time frames are bouncing back but the higher time frames are down, those are sell on a rise or a buy on a dip kind of a state. So ये एक major advantage होगा अगर आप आपके स्क्रीन को 2, 3 या 4, depending completely on what your approach strategy setup is, but कोशिश कीजिए that you take a look at least 2 or 3 different time frames. You trade that particular time frame, but you get a perception of what's happening in your trade across different time frames, right? I hope you found this useful. Do let me know. Your comments will be very, very useful for me. Dasera, so I wish you all the best. Good wishes from my side also. And when tomorrow the market opens, looking forward to a profitable week ahead for everyone. Take care, trade well and trade wise.